Jai Shri Mataji. Let us bow down to Shri Mataji and take बंधन. श्री माताजी को नतमस्तक होकर वंदन करेंगे और बंधन लेंगे. तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र.
hard to understand how people could not feel him. They all have suffered so much. Whatever it is, for the divine, they do not suffer. And they come on this earth to show how stupid we are. How we have not been able to see the truth, to see the reality. But we repeat the mistakes again and again. Because we do not know ourselves, which is the only instrument by which you can know the divine. And when we do not know ourselves, we cannot understand the divine. Still, it's such a great thing to see so many of you are there in that subtle area of the spirit. That you have the sensitivity, that you can feel the beauty of their lives, the greatness, the purity, the innocence of these great incarnations who came on this earth. But with all that, we have a very great responsibility also. Christ had only 12 disciples who didn't even get their realization till Christ lived. Afterwards, they got realization, 12 of them. And imagine somebody like Thomas came to India. So, how they took so much responsibility? They were just ordinary fishermen. They didn't care for anything else, but they thought this is the truth and that we have to spread this. This is our responsibility. We are so many. That is our responsibility. It's not only to enjoy yourself, but to spread Sahaja Yoga and to practice it. Moreover, to have an ideal life that people could see us, how we behave, how we talk, how we treat each other, how we love each other, how we understand each other, how we run to help each other like one body. The message of Christ's life is love. He openly talked about it. Before that, I don't think any incarnation talked like that, in that manner, so openly. He told his disciples that the greatest joy for me is to see that you love each other. All those things that have really made our society, made our lives miserable, of jealousies and pettiness, small-mindedness has to go. Otherwise, you are not Sahajogis. Where is the time for jealousy? There's no mind that can see those things anymore. So all of us have to evolve. And the sign of evolution is not how much we can talk about Sahaja, how much we can practice Sahaja Yoga, how much we spread Sahaja Yoga. That's not the sign. Don't be convinced by that. But the sign of Sahaja Yoga is that how much we can love each other.
how much we understand each other, how much we can endure for others with great joy, and how much we do not bother about ourselves, our families, our children. This mind, my, me has to. It doesn't go by saying go. It's a state again. But then only you should be convinced. Now, I am a surgeon. Christ has said, love thy neighbor as thyself. I would say that you have to love every Sahaja as yourself because they are part and parcel of this body. You cannot afford to hate someone. Of course, those who are useless are thrown out of the body. But those who are there living, you must love them. I think this is the message of Christ. And other message is absolute morality. Absolute morality. As he has said, that thou shalt not have adulterous eyes is such a subtle thing to say. That you should not have eyes which have adultery in them. It doesn't mean only for women, but it also means for things. It also means for properties. It also means for the success of others. Adultery means the one where you try to aggress and to be greedy about it. If there is greed or if there is lust in your eyes, then it's an adulterous eyes. It is very subtle. I know. It is very subtle. And attention is the best way which communicates to you whether you are above lust and greed or not. But the more you try to rise above these things, your heart opens and you start enjoying your virtues, your morality. You enjoy. You don't think you are moral. You don't think that way. But you enjoy that state where you are really moral because you are moral. Just enjoy yourself. It's a headache to be interested in some woman, interested in some man. It's a headache. It's a joyless pursuit. And once you're detached, the joy is complete. Because you are one with reality. Pure reality. There is no inhibitions, no restrictions, no taboos, nothing. But just you are that. Nobody has to tell you. If you are gold, you are gold. Nobody has to tell you now, you don't behave like non-gold. You are gold, so you are gold. That's the power. And the power of a Sahaja is that he is the purest form of human being. Without the power, what are we? Nothing. The purest form, and in the purest form of love, you get the purest form of knowledge. This is Kaivalya. It's the absolute knowledge and
absolute love, detached, pure. That time, when you are in that state, you just watch anything, see anything, all the power of giving joy from everything just starts bubbling into you. And you don't see the bad things at all. You never see the bad things. The power of enjoying everything is the power of Sahaja Yogis, to enjoy everything. Anything can be enjoyed. Any small thing can be enjoyed. Any big thing can be enjoyed. But impurities, one cannot enjoy. Immorality, you cannot enjoy. It's not enjoyment. It's just a fascination, maybe. I don't know what it is called as. So I cannot enjoy them, so I don't know what it is. But what you enjoy really is the purity of another personality. The purity of this, all that is done by someone with such pure heart. And the deeper you see, it becomes simpler and simpler. Then you don't say smart things. No, you don't. Don't have to show off, nothing. You just say simple, sweet, nice things. They're so touching, so beautiful. But must allow the deeper love within us to come out. Many people love also, but they don't know how to express it. There are many people who are misunderstood because they don't know how to express their love. In Sahaja Yoga, you have to learn the yukti, the technique. Yukti is a very sweet word, not technique is not. Because technique deals with something very materialistic. But yukti means the trick of the trade. What to say when? That would really just pierce like a dart in the heart of someone, a beautiful feeling. That one has to understand and practice. Or little things here and there, little turning here and there is an art of living a Sahaja Yoga life. And I've seen children say such sweet things. That's why Christ has said that you have to be like children to enter into the kingdom of God, but I would say to stay in the kingdom of God. You have to be simple like children, deep and simple. This seminar, or whatever you may call it, Ganapatipule, I don't know what you call, is a divine congregation of all the gods and goddesses. Is very symbolic to me because this represents the whole world. It represents the problems of the whole world and also the solutions. Such a beautiful idea. I don't know how it worked into my head that I started this kind of a beautiful congregation to meet you all. It was very nice yesterday. You kept awake all the while and came to see me. I could meet all of you and I could have some rapport. Couldn't say much, was just smiling at you. But just I could express my love and you gave me that chance.
I must thank you very much for that. जय श्री माता जी। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः। आदि गुरु गुरुदेव के कर पंकज तिरनाम, सुमिरो माता सरस्वती हम पर हो सवार। माता जी की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा और प्रजा नमन करो स्वीकार। गुरुजन राजा और प्रजा नमन करो स्वीकार। श्री माता जी के चरणों पर हम नमन करते हुए, वंदन करते हुए श्री माता जी से अनुमति लेते हैं कि श्री माता जी आज के इस सहज सेमिनार की शुरुआत करने की हमें अनुमति प्रदान करें। जय श्री माता जी। अब हम हमारे सहज सेमिनार की और उसके परफॉर्मेंसेस की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा मिस अनन्या काले को, जो एक भरतनाट्यम की प्रस्तुति हमारे सामने करेंगी। वो अहमदनगर से है। ज़ोरदार तालियों से आप अनन्या काले का स्वागत करिए। जय श्री माता जी। Jai Shri Mataji. Firstly, thank you Shri Mataji. Today I'm going to present Shlokam and Jatiswaram. Firstly, starting with Shlokam. Angikam bhuvanam yasya vachikam sarva vangmayam aharyam chandra taradi tam numam satvikam shivam. His body is universe, his language is literature, his jewels are stars and moons. I bow down to that Satvik Shiva. Continuing with Varali Jatiswaram. Jatiswaram is basically, Jati means rhythmic syllables on mridangam, and swaram means 7 classical notes in music. So Jatiswaram means dancing on the rhythmic syllables of mridangam and the 7 swaras. Jai Shri Mataji. Angikam bhuvanam yasya
सर्ववान्मयम् आहार्यं चन्द्रे तारादि तं नमः सात्विकं शिवम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय sa ni da pa ma ga ri sa ni sa sa ni da pa ma ga ri sa ni sa ga ri ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa ni sa ga ri ga ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa ni sa
जय श्री माता जी, आप ज़ोरदार तालियों से अनन्या का हौसला बढ़ाइए। इन्होंने पिछले साल भी इस स्टेज पर परफॉर्म किया था और श्री माता जी की परम कृपा से उनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी कला जो है वो प्रतिदिन निखरती जा रही है। और तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम अपने तालियों से उनकी हौसला अफजाई करें ताकि वो अगली बार फिर से जब इस स्टेज पर परफॉर्म करे तो और भी बेहतर आगे कर सके। सो नाउ आई इनवाइट योगीराज देवकर काका टू फेलिसिटेट अनन्या काले। जय श्री माता जी, जोरदार तालियां फिर एक बार। जय श्री माता जी। जो हमारी अगली प्रस्तुति है वो है हिना जाधव। वो राजस्थानी फोक सॉन्ग पर नृत्य करेंगी। जोरदार तालियों से हम हिना जाधव का स्वागत करेंगे। जय श्री माता जी। हीना जाधव ये नासिक कलेक्टिविटी से है। जय श्री माता जी। भाग जाग्यो रे धरती पर माता निर्मल आ गई रे। भाग जाग्यो रे, ओ भाग जाग्यो रे धरती पर माता निर्मल आ गई रे। भाग जाग्यो रे, मानव रूप में निर्मल माने, मानव रूप में निर्मल माने अलख जगा दियो रे। भाग जाग्यो रे, ओ भाग जाग्यो रे धरती पर माता निर्मल आ गई रे। भाग जाग्यो रे। देश विदेश से सहज पधार्या बारों में लो लाग्यो रे। देश विदेश से सहज पधार्या बारों में लो लाग्यो रे। मरुभूमि पर चेतन बरसे, मरुभूमि पर चेतन बरसे आनंद छा गयो रे। भाग जाग्यो रे, ओ भाग जाग्यो रे धरती पर माता निर्मल आ गई रे। भाग जाग्यो रे। लक्ष्मी आली तिची कृपा आम्हावर झाली। 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 लक्ष्मी आली आली तिची
तिची कृपा आम्हावर झाली. मैया थारो चंदा जैसो रूप सलोनो, मैया थारो चंदा जैसो रूप सलोनो, मारूप सलोनो, मारूप सलोनो. ममतारा लाग्या भंडार, मा निर्मल थारे आंगणीए. ममतारा लाग्या भंडार, मा निर्मल थारे आंगणीए. चक्र त्रिशूल मैया अष्टभुजाधारी, चक्र त्रिशूल मैया अष्टभुजाधारी, माँ अष्टभुजाधारी, माँ अष्टभुजाधारी. कांधे तारे केश लहराए, माँ निर्मल थारे आंगणीए. कांधे तारे केश लहराए, माँ निर्मल थारे आंगणीए. ममतारा लाग्या भंडार, मा निर्मल थारे आंगणीए. ममतारा लाग्या भंडार, मा जय श्री माता जी, जोरदार तालियां. इतनी कम तालियां, राजस्थान की महाराणा प्रताप की भूमि से कोई नहीं है यहाँ पे. कितने लोग हैं राजस्थान से? तो जोरदार तालियां राजस्थानी फोक सॉन्ग के लिए. तो मैं इनवाइट करता हूँ प्रकाश बहरवाल जी, जो सीसी मेंबर है राजस्थान से, टू फेलिसिटेट हीना जाधव जी. देखिए, राजस्थान की बात हुई तो महाराणा प्रताप जी का थोड़ा सा स्मरण करते हैं. मीनवाइल व्हेन दे फेलिसिटेट. जोरदार तालियां. देखिए, अगली प्रस्तुति के लिए थोड़ा सा 5 मिनट का समय है. तो मीनवाइल जब राजस्थान की बात हुई है तो महाराणा प्रताप जी का स्मरण करते ही है. जैसे महाराष्ट्र में आते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं तो पूरा बदन शक्ति से संचारित हो जाता है. तो जैसे ही राजस्थान का नाम आता है तो महाराणा प्रताप का स्मरण ना करे तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा. तो ये प्रस्तुति कहीं सुनी हुई है कि रक्त तू उबाल सा, सख्त है तू ढाल सा, भारत कहे वीर सा, मेरा पुत्र प्रताप है. चढ़ा रक्त का टीका है, मिट्टी को माये माने. चलो साथ साथ दे सकते हैं आप, है ना? चढ़ा रक्त का टीका है, मिट्टी को माये माने, देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने. सर साहसी सपूत का देश है, कण कण में ये जाने. जय 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 जिसकी जयकार, प्रताप है वीरों की साहस का जो हुंकार. प्रताप है मातृभूमि का जो है ये पुत्र प्रताप. प्रताप है. तो जोरदार तालियों से हम महाराणा प्रताप जी का, उनकी शक्ति का, श्री माता जी के स्पीचेस में भी उनका कई बार वर्णन है कि जब वो युद्ध में जाते थे तो सारे गण उनको सहायक होते थे. तो हम श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे कि हमें भी उन वीरों की शक्ति से संचरित कर दीजिए.
हमारे अंदर भी वो साहस, हमारे अंदर भी वो श्रद्धा भक्ति स्थापित करने की कृपा करें श्री माता जी। जो हमारी प्रस्तुति है नेक्स्ट, वो भी एक रीजनल भजन ही है जो झारखंड से है। तो मैं श्रीमती झालो देवी को आमंत्रित करता हूँ कि वो स्टेज पर आकर अपनी प्रस्तुति का प्रदर्शन करें। जय श्री माता जी। श्री माता जी की परम कृपा से हमें अलग अलग रीजन्स के अलग अलग फोक भजन सुनने मिल रहे हैं, तो इसलिए हम श्री माता जी को धन्यवाद करते हैं ज़ोरदार तालियों से। उनकी जो फोक भजन है हम उनको सुनेंगे, उसकी सराहना करेंगे और ये जो नया फ्लेवर है, अलग सा रंग है, उसको अनुभव करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। और आपसे अनुरोध ये भी है कि आपकी जो प्रस्तुति है उसके बारे में आप अगर सभी सहयोगियों को कुछ बताना चाहें तो आप ज़रूर बताइए, ताकि उन्हें इस जो आपकी फोक शैली है उसके बारे में थोड़ी अधिक जानकारी भी मिल सके। महाराष्ट्रात श्रीमती झालो देवी के साथ इस परफॉर्मेंस में जो साथ देंगे उनका नाम है पार्वती, विजय और गोविंद। तो उनका भी हम ज़ोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। जय श्री माता जी।
हेलो हेलो चेक हेलो। जय श्री माता जी। बात करो जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। ये जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। रांची झारखंड का लोकल भजन है जो रांची में जो चलता है, नागपुरी नागपुरी ये भजन है। जय श्री माता जी। ये भजन का बोल है, कितना सुंदर मेरी निर्मल माँ लगती है। और माँ हमें, माँ का जो है हमारा मन जहाँ पर जाता है वहाँ माँ हमें ले जाती है। ये फर्स्ट जो भजन का अंतरा है उसका ये बोल है। जय श्री माता जी। कतई सुंदर लागेला मोरी निर्मल माया भी शक्तिमान। कतई सुंदर लागेला मोर निर्मल माया भी शक्तिमान। जहाँ जहाँ माँ के मन करेला हुआ मैया ले गेला। जहाँ मन के इच्छा करेला हुआ मैया ले गेला। कतई सुंदर लागेला मोरी निर्मल माया भी शक्तिमान। कतई सुंदर लागेला मोर निर्मल माया भी शक्तिमान। जहाँ जहाँ माँ के मन करेला हुआ मैया ले गेला। जहाँ मन के इच्छा करेला हुआ मैया ले गेला। जहाँ माँ की मन करेला हुआ मैया ले गेला। जहाँ मन के इच्छा करेला हुआ मैया ले गेला। निर्मला मैया लागे सारे धर्मों करिया तार रे। निर्मला मैया लागे सारे धर्मों करिया तार रे। जहाँ 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 माँ की मन करेला हुआ मैया ले गेला। जहाँ मन के इच्छा करेला हुआ मैया ले गेला। जहाँ माँ की मन करेला हुआ मैया ले गेला। जहाँ मन के इच्छा करेला हुआ मैया ले गेला। कतई सुंदर लागेला निर्मल माया के शक्तिमान। कतई सुंदर लागेला निर्मल माया के शक्तिमान। जहाँ 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 माँ के मन करेला हुआ मैया ले गेला। जहाँ मन के इच्छा करेला हुआ मैया ले गेला। तोहे लागी जी जसमान, जी जसमान। तोहे लागी जी जसमान, जी जसमान। तोहे लागी मेरी माँ, मेरी माँ। तोहे लागी मेरी माँ, मेरी माँ। सरधा 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 भक्ति से मैं पूजा करबू माँ। सरधा भक्ति से मैं पूजा करबू माँ। कतई सुंदर लागेला मोर निर्मल माया भी शक्तिमान। कतई सुंदर लागेला मोर निर्मल माया भी शक्तिमान। जहाँ
समझावे माय सारे सहजी के मन एकता बनावे माय सारे सहजी के मन एकता बनावे माय कते सुंदर लागेला निर्मल माय आदि शक्ति माय कते सुंदर लागेला निर्मल माय आदि शक्ति माय जहाँ 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 माटी मन करेला हुआ मैया ले गेला जहाँ मंदिरिचा करेला हुआ मैया ले गेला जहाँ माटी मन करेला हुआ मैया ले गेला जहाँ मैया ले गेला हुआ मैया ले गेला हुआ मैया ले गेला। जय निर्मल माता सहजदायिनी माता राउर के प्रणाम आली शरण हम राउर मैया बनाई देव बिगड़ल का राउर यसेरा मैया राउर यसेरा राउर यसेरा राउर यसेरा मैया राउर यसेरा राउर यसेरा राउर बिना के करी बेड़ा मोर पार हाय राउर यसेरा राउर यसेरा राउर यसेरा राउर यसेरा राउर यसेरा मैया राउर यसेरा राउर यसेरा राउर यसेरा मैया राउर यसेरा राउर यसेरा राउर बिना के करी बेड़ा मोर पार हाय राउर यसेरा राउर यसेरा राउर यसेरा मैया राउर यसेरा राउर यसेरा राउर यसेरा मैया राउर यसेरा राउर यसेरा। राउर बिना दुनिया में पत ना डोले राउर कृपा बिना हिया कोई ना बोले राउर बिना दुनिया में पत ना डोले राउर कृपा बिना हिया कोई ना बोले याली हम राउर बिना कर उधार हाय राउर यसेरा राउर यसेरा राउर यसेरा मैया राउर यसेरा राउर यसेरा राउर यसेरा मैया राउर यसेरा राउर यसेरा। सहस्त्र से जन्म दिले के कर्म देवी हाथ ना धरब हमारे तो का होवी सहस्त्र से जन्म दिले के कर्म देवी हाथ ना धरब हमारे तो का होवी झूठा ई दुनिया से गेलो मैं हाय रे हाय राउर यसेरा राउर यसेरा राउर यसेरा मैया राउर यसेरा राउर यसेरा राउर यसेरा मैया राउर यसेरा राउर यसेरा राउर बिना के करी बेड़ा मोर पार है राउर यसेरा
जय श्री माता जी, जोरदार तालियां। कितनी प्यारी सी ट्यून थी इनकी, कितने प्यारे शब्द थे, मीठे मीठे। जय श्री माता जी, जोरदार तालियों से जो उनका फोक भजन था। तो पहले भजन की ट्यून तो इतनी प्यारी थी, जैसे कि जहाँ माझे मन गईला वहाँ मैया हमें ले गईला, ऐसा ही कुछ था। थोड़ी सी कोशिश हम करें समझने की तो बहुत आनंद आता है इस अलग अलग जो भाषा है उनको समझने में। तो आई इनवाइट श्री श्रीधर पाई जी टू फेलिसिटेट द झारखंड कलेक्टिविटी। श्रीमती झालू देवी और उनकी सारी सहयोगी टीम। अब मैं जो फरीदाबाद कलेक्टिविटी है उनको आमंत्रित करता हूं, जो हमारे सामने सहज भजन की प्रस्तुति करेंगे। फरीदाबाद कलेक्टिविटी से पूजा, उन्नति, नित्या और गीता। आप ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए, उनकी सराहना करिए। जय श्री माता जी।
श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाती है माँ, कोई बुला के देख ले। माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाती है माँ, कोई बुला के देख ले। माँ का नाम मोरी माँ का नाम, मोरी माँ का नाम अति मीठा है। जिस मन में अभिमान भरा है, माँ कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा है, माँ कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। माँ के नाम की ज्योति दे, माँ के नाम की ज्योति दे, जला के देख ले। माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाती है माँ, कोई बुला के देख ले। माँ का नाम मोरी माँ का नाम, मोरी माँ का नाम अति मीठा है। गीत अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। गीत अजामिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सगन कसाई। नीच कर्म को करने वाला तर गया सगन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले। माँ का नाम अति मीठा है, गा के देख ले। माँ का नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाती है माँ, कोई बुला के देख ले। माँ का नाम मोरी माँ का नाम, माँ का नाम मोरी माँ का नाम अति मीठा है। आधे नाम पे आ जाती हो, कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाती हो, कोई बुलाने वाला। बिक जाती है
फरीदाबाद कलेक्टिविटी के लिए ज़ोरदार तालियां। मैं विलास काते पटेल जी को विनंती करता हूं कि वो उनको फेलिसिटेट करें। जय श्री माता जी। Jai Shri Mataji. The Turkish collectivity, they have developed a mobile app to share Shri Mataji's recipes, which are given by Kalpana Didi. टर्किश कलेक्टिविटी ने एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है जिसमें श्री माता जी की जो रेसिपीज़ है वो सारी दी गई है। तो ये इसकी डिटेल्स आपको शेयर किए जाएंगे यहाँ पर। तो मैं उन्हीं को इनवाइट करता हूँ, उसके बारे में वो अधिक जानकारी आपको देंगे। जय श्री माता जी। Jai Shri Mataji, dear brothers and sisters, I would like to introduce you. Thank you. My name is Zeynep. I'm from the Turkish collectivity. And I would like to introduce you a mobile app which was prepared with the goal of sharing our mother's healing recipes with the whole world, with everyone in the world. The name of this app is Shri Mataji Nirmala Devi's Recipes by Kalpana Didi. All of these recipes were introduced to us by Kalpana Didi, and she learned these recipes from Shri Mataji. And the Sahaja yogis cooked all these recipes with Kalpana Didi, took notes, and we have worked to put all of these together in order to create this mobile app. I would like to read a little bit of the introduction of the app. Why is that people all over the world feel mother's cooking is the best? Is it because the tastes and likes that we have acquired in our childhood are still with us for the rest of our lives? Maybe. Is it because the dishes we enjoyed eating as a child provide us with the same feeling of comfort and security when we are older? Possibly. Or is it because mother not only buys the best possible ingredients, but she adds this other very special ingredient, which is called love? That is why mother's cooking is the only food that will ever come close to Amrut and Ambrosia. Cooking with Shri Mataji was a tremendous experience. Under her strict but ever-loving motherly guidance, we felt like children receiving all the attention, care, and love from a mother who wanted us to become perfect. She gave importance to every detail so that we would understand every aspect of cooking. These were unforgettable moments, full of joy,
satisfying for our palates, nourishing for our health, but mostly for our soul. Kalpana Didi learned cooking from Shrimataji. After Didi got married, Shrimataji moved to London, but she would spend several months in the home of Kalpana Didi in Mumbai, India, every year. That is when Shrimataji taught Didi the art of cooking with love and with spontaneity. Didi has shared some of mother's recipes with us and has practically demonstrated every recipe in this book. And she says, traditional Indian cooking in the old-fashioned style is by instinct. The person who cooks sometimes modifies the recipe by tasting the flavor and makes additions and subtractions to the ingredients during cooking to perfect the taste. So we prepared this app to share with you these recipes which were given by Kalpana Didi and Shrimataji's loving and healing recipes to share with the whole world. We will be delivering some handouts for you, which includes the QR code. Please download this app and please make sure to share it with everyone so that our mother's recipes can be spread all over the world, which will be healing for their souls and bodies. Thank you very much. जय श्री माता जी, आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और एप्पल ऐप स्टोर पे भी ये ऐप उपलब्ध है। जय श्री माता जी। हम सारे सहयोगी हैं, तो हमारा धर्म जो है वो विश्व निर्मल धर्म है, और अगर हमारा धर्म विश्व निर्मल धर्म है तो हमारी जो भाषा है वो हमारी भाषा प्रेम की भाषा है, और अगर हमारी भाषा प्रेम की है तो उसके जो अक्षर है, वो सारे जो वर्ड्स है वो संगीत के हैं। तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूज़िक इन सहयोगा, इन विश्व निर्मल धर्म एंड इन द एक्सप्रेशन ऑफ लव। दैट इज़ व्हाट सिग्निफिकेंस द म्यूज़िक होल्ड्स इन सहयोगा कल्चर। तो सहयोग के कल्चर में, विश्व निर्मल धर्म के कल्चर में जो संगीत का स्थान है वो प्रेम को अभिव्यक्ति करने का एक माध्यम इस प्रकार से है। तो सहयोगा और म्यूज़िक का जो सेमिनार है उसका प्रेजेंटेशन अब आपके सामने प्रस्तुत होगा। जय श्री माता जी। ये सेमिनार, द प्रेजेंटेशन इज़ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूज़िक इन सहयोगा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। एंड जस्ट शॉर्टली आफ्टर द प्रेजेंटेशन सेमिनार, म्यूज़िक सेमिनार, इसके तुरंत बाद ही पुणे युवा शक्ति का ड्रामा है उसकी प्रस्तुति होगी। ये बहुत ही अच्छा देवी भागवत पर आधारित ड्रामा है, उसकी प्रस्तुति होगी जस्ट आफ्टर दिस सेमिनार। तो आप सब बने रही हैं। जय श्री माता जी। तो इसका प्रेजेंटेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी।
सहजयोगी कलाकार और संगीतकारों के साथ संवादात्मक सत्र इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। We welcome you all in today's program of interactive session with Sahaj artists and musicians. अब हम परम पूज्य श्री माता जी को नमस्कार करेंगे, फिर कुंडलिनी उठाकर बंधन लेंगे। उसके बाद 3 महामंत्र, श्री गणेश मंत्र और श्री माता जी के अमृतवाणी को सुनते हुए ध्यान में स्थित हो जाएंगे। Now we all bow to Shri Mataji, then raise our Kundalini and take Bandhan. After that, 3 Mahamantra, Shri Ganesh Mantra, and we will settle in meditation while listening to Shri Mataji's speech. आपल्या महाराष्ट्रात असे युवक कलाकार आहेत हे पाहून असं वाटतं की ही परंपरेने आलेली एवढी मोठी विद्या महाराष्ट्रात तरी जपून ठेवली जाईल. सर्व सहयोगांनी मी आधी सांगितलं आहे की शास्त्रीय संगीत समजलंच पाहिजे, कारण हे ओंकार आहे. आणि जेव्हा तुम्ही शास्त्रीय संगीत त्याची रागदारी ऐकता तेव्हा आपोआपच चैतन्य व्हावं लागतं आणि ते तुमच्या कुंडलिनीत इतकं परिणामकारी असतं. आधी सहजच ते सगळं घटित होतं. इतकंच नव्हे, पण परदेशात जिथे जिथे सहयोग आज 16 देशात आहे, सगळीकडे मी त्यांना आपण सगळ्यांनी शास्त्रीय संगीत शिकलं पाहिजे म्हणून सांगत असते आणि सर्व लोकांनी ते संगीत शिकण्याचा पूर्ण प्रयत्न केलेला आहे. इतकंच नव्हे तर न समजताही आत्म्याचं संगीत असल्यामुळे ते सगळे अगदी तल्लीन होऊन जातात. तसंच आज भारतवर्षात जेवढे सहयोगी आहेत त्यांनी आपलं शास्त्रीय संगीत पूर्णपणे उचलून धरलं पाहिजे, कारण ती माझ्या हृदयाची गोष्ट आहे. हे आत्म्याचं स्वरूप आहे जे प्रगट रूपाने वाहत आहे. सगळ्या कलाकारांचा मान केला पाहिजे आणि ह्या कलेचा मान केला पाहिजे. सर्व कलेमध्ये संगीत हे उच्च दर्जाचं आहे. तेव्हा कोणत्या प्रकारची टीका वगैरे न करताना त्याबद्दल आदर ठेवून ते समजून घेतलं पाहिजे. म्हणजे सहयोग अत्यंत सहज होईल मला सुद्धा. असं आज आपण आम्हाला सगळ्यांना तल्लीन करून दिलं, त्याबद्दल आम्ही आपले फार आभारी. काल मी नागपूरच्या सर्व मंडळींना आपल्यातर्फे आभार मानले होते आणि आज परत त्यांनी येऊन इथे जे काही आपल्या कलेचं प्रदर्शन केलं त्याबद्दल सुद्धा मी त्यांचे अत्यंत आभारी आहे. त्याशिवाय उद्या आपल्या साऊथ इंडियातून आलेले चिट्टी बाबू, त्यांचा विशेष अट्टहास हा कि माँ आपके सामने मुझे ज़रूर बजाने का है, ते आलेले आहेत आणि त्यांचे संगीत आपण समजून घेतलं पाहिजे. तेही फार उच्च प्रतीचं आहे. अशा रीतीने वैरभाव सोडून जसं आपण सांगितलं, सर्व संगीतातलं जे मर्म आहे ते जर जाणून घेतलं तर त्यातला आत्मा आपल्याला नेहमीच आनंदित करतो. उद्या सर्व सहयोगांनी अवश्य आलंच पाहिजे, कारण साऊथ इंडियन म्युझिक आहे म्हणून आम्ही येणार नाही असं कुणी म्हटलेलं मला चालणार नाही. ते तुम्ही एकदा ऐका, म्हणजे आपल्याला आश्चर्य वाटेल की त्यांच्यामध्ये सुद्धा किती कला आहे आणि किती मनोरंजक आहे ते. त्याशिवाय आपले टाकडे गुरुजी सुद्धा व्हायोलिनवर उद्या जवळजवळ 1 तास वाजवतील आणि आपल्याला परत मंत्रमुग्ध करतील. मी आपल्याला सुद्धा उद्या सगळ्यांना आमंत्रण देते
की कृपा करून सर्वांनी यावं आणि ते संगीत ऐकून घ्यावं आणि समजून घ्यावं. त्यांनी आपल्या संगीताची साकारणी होऊ शकते आणि त्यांच्याही संगीताची होऊ शकते. त्यांचे जे ज्याला आपण जसं म्हणतो ताना आहेत किंवा त्यांचे जे आलाप आहेत, त्यांचा जो ढंग आहे, जसं तुम्ही पंजाबी ढंग घेतला, बनारसी ढंग घेतला महाराष्ट्रात, तसा थोडासा मद्रासी ढंग घेतला तर काही हरकत नाही आणि तो अत्यंत सुंदर असतो. अशा रीतीने आपल्याला एक समग्रता म्हणवता येईल. Especially for music, I must say that music carries the vibrations. It's in the rhythm of it. It carries the vibrations. The lahari, which we call as Saundarya lahari, or you can call it Chaitanya lahari, are really carried by notes and music. And that is why all of them, though they are people not acquainted with our Indian music, they appreciate it. It has something to do with your spirit, and it is known that our music has come from the Atma. And that's why everyone, they don't know any ragas, they don't know any talas, but they appreciate. And now they have started understanding even ragas and talas. आता ही गाणी झाली सुरुवातीला ते इंग्लिशमध्ये किंवा आपण असं म्हणू की पाश्चिमात्य पद्धतीत झाली आणि तुम्हा सर्वांना ती एवढी आवडली. ते एक मोठं मला समाधान वाटलं की नाहीतर इथे सगळे संगीतज्ञ बसलेले आहेत आणि ते म्हणतील माताजी काय तुम्ही सुरू केलं. पण आपण सर्व प्रकारचं संगीत समजून घेतलं पाहिजे. अर्थात जे नुसतं काहीतरी आजकाल निघालेलं तेच म्हणत नाही मी, पण सर्व तऱ्हेचं. मला तर वेस्टर्न क्लासिकल म्युझिकचा फार नाद आहे, तसं साऊथ इंडियन म्युझिकचा मला फार नाद आहे आणि आपला तर आहेच. तेव्हा आपली दृष्टी व्यापक करायला पाहिजे आणि ते बघून मला फार आनंद वाटला की तुम्ही सर्वांनी जे फ्रेंच लोकांनी तुमच्यासमोर प्रस्तुत केलं. उसके बाद मुझे खासकर आज के जो अपने बड़े भारी संगीतकार मशहूर हैं, इनके बारे में क्या बताऊं, आप तो जानते ही हैं कि कितनी सुंदरता से और कितने प्यार से इन्होंने अनेक तरह के गीत इकट्ठे किए. उन सब गीतों में वो आपके हृदय की बात कह रहे और इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था. महाराष्ट्रीय लोकांचं एक वैशिष्ट्य आहे की एकदा जर का क्लासिकल म्युझिक सुरू झालं कुठे, मग तुम्ही खेडे गावात असेल मग कुठे असला झालं, मग त्याच्यानंतर मग काय बोलायलाच नको, सगळे विरघळले. तेव्हा त्यांच्याबद्दल काही सांगण्यासारखं नाहीच आहे, कारण एकदम संपलंच ते. तर अजित कडकडे साहेबांनी अनेकदा येऊन आम्हाला इतकं आमचं मनोरंजन केलेलं आहे की मी त्यांची ऋणी आहे आणि सर्व सहयोगी त्यांची ऋणी. ते कबेल्याला सुद्धा आलेत. त्यावेळेला काही आम्ही गडबडीत सापडलो, त्यामुळे काही त्यांचं बोलवणं झालं नाही, पण प्रत्येक वर्षी त्यांना बोलवलंच पाहिजे असा प्रत्येकाचा अट्टाहास. आता इतकं सुंदर त्यांचं गाण्याची पद्धत आहे की गातात क्लासिकलच गायला पाहिजे, पण त्याच्यामध्ये जे रिदमिक पॅटर्न्स बनवतात मध्ये मध्ये आणि कधी फास्ट कधी स्लो, त्यांनी ज्याला समजत नसेल तो सुद्धा खेळू आहे, त्याला असं वाटेल की हे काहीतरी अभिनव आहे. पण आता तुम्ही जर अगदी सारखं कृष्णराव पंडित सारखं गाणं सुरू केलं तर झालं 15 मिनिटात सगळे उठून जाते. तर ह्या आजकालच्या धक्काधक्कीच्या जीवनात अशा रीतीने जे आपण आलटून पालटून गायलंय ते फारच सगळ्यांनाच, मग ते कुठल्याही देशातले असेल आता, फारच आवडलेलं आहे. सगळे अगदी स्तब्ध बसले आणि सगळ्यांनी फार त्याचा आनंद घेतला. त्याबद्दल मी खरोखर आपली ऋणी आहे. कारण आम्ही इथे जंगलात येऊन बसलो. आता जंगलातही म्हटलं की अजित कडकड्यांचं गाणं ऐकायचं म्हणजे इट इज टू मच.
मी म्हटलं सुद्धा तुम्ही कशाला त्यांना त्रास दिला इतक्या इथे आणायचं खडगे. मध्ये रस्त्यामध्ये सगळे आम्ही आदळत आपटत आलो. त्याच्यावरून मला मग इथे आल्यावर कळलं आपण आला तर म्हटलं झालंच आणखी त्यांना कशाला त्रास दिला. पण आपण ज्या आस्थेने आणि ज्या प्रेमाने आपण सगळी गाणी सिलेक्ट केली आणि ते सुंदर म्हटली फारच. सगळे मला सांगतात की आम्ही अजित कडकडे यांना माताजी तुमच्यासमोर ऐकतो तर त्याचं वेगळंच रूप असतं आणि मग तसं ऐकलं तर एवढं नाही होत म्हटलं असं. तर हे सांगायचं म्हणजे असं की आपण एक फार धार्मिक व्यक्ती आहात. इतकंच नव्हे पण आपलं रिअलायझेशन झालेलं आहे आणि भक्तीचा सुद्धा खूप संचार आहे. तेव्हा या समन्वयामुळे जी एक उत्कृष्ट कलासिद्धी आपल्याला साधलेली आहे त्याच्यामुळे हे आमचे सगळे सहयोगी मग ते परदेशातले असोनात का किंवा हिंदुस्थानातले असणार नेहमी म्हणतात की कमीत कमी एक प्रोग्राम तरी त्यांचा तुम्ही फॉरेनला ठेवा. ही अगदी आग्रहाची विनंती असते सगळ्यांनी. पण मागच्या वेळा आम्ही जरा गडबडीत सापडलो त्यामुळे ते झालं नाही. पण प्रत्येक वेळेला आपण जी वेळ आपल्याला साध्य होईल जी पूजा आपल्याला साध्य होईल ती जर आपण कळवलं तर आम्हाला बरं पडेल. म्हणजे आम्ही त्या ह्याने आपल्याला बोलू कारण आपणही फार बिझी असतात. तर आज सर्वांच्या तर्फे मी आपलं अभिनंदन करते. As if through these musicians also our family of Sahaja Yoga is expanding so much. And the way they are realizing the oneness of our lives and oneness of our value system. As if they are all getting absolutely lost into our own families of Sahajogis. I don't find any difference because they all have vibrations, they all play with vibrations, and nothing goes wrong. I've seen it just like, as we say, sanchar hona. I felt there was sanchar in them the way they started playing. The whole Shakti started moving. And it was a remarkable thing I've seen, whether they are Muslims, Christians, Hindus, Sikhs, or anything. This music transcends them. This Nusrat Ali Khan Sahab was sitting on the stage. And he just looked at me. I don't know what he knows about me. He said to me, "Ma, come and sit next to me." I was amazed how he recognized me. I was like any other audience sitting there. So I was sitting on the ground. He just called me. I was so surprised at this gentleman, Nusrat Ali Khan. So it transcends, This music is divine. It transcends all races, all religion, all nonsensical, divisive ideas. No doubt about it. And that is what is Sahaja Yoga. How our music is spreading into their hearts. And this our music, which is Indian music, is a divine music. Also they have very beautiful classical music, no doubt about them. And I also enjoy that very much. But our music is a different type because in this, the rapport is established between the artist and the listeners. And every time they can start creating. They have freedom to create. And that's what I think the Sahajogis are just all the time like to hear only our Indian classical music, all the time. And they appreciate it very much. Whatever country they may come from, but you'll be amazed how they enjoy this music. And this is to also say one of the desires of my father, that he said that our music is so divine, it should reach the whole world. I don't know if it is Sahaja Yoga that has helped you, but this collective singing is the biggest thing. Collective in tune with all other musicians is really very, very great. And this union, this oneness, if it is through Sahaja Yoga, I'm very happy about it.
we are all overly satisfied, and I can see your future. It will be a great future for all of you. We shouldn't take so much of botheration about how we'll do it and how will it work out. It will work out. Your desire is much stronger than the desire of any other artist. So just desire, it will all work out, and we'll show to them how Sahaja Yoga can create such beautiful music. I would request all the Indians to develop that subtle understanding. You see, say if you are a honeybee, only then you can suck in the honey. The flies cannot. So you have to develop that sensitivity. I would say to Indians, I'm sorry to say, that you have to develop that sensitivity within you, which is possible through meditation and through Kundalini awakening and balancing, and ultimately getting connected with this all-pervading power of Chaitanya. Because sound is the second state. First was, of course, they said the word, but it was silent. Came into sound. And if you can understand the subtle of the sound within you, if you can get one with it, it gives you that joy. Now, you see, because some or other, this is a Sahaj trick, I think, that your energy is tuned up to a very subtle and deep understanding of music. Otherwise, it would never have worked like that. I mean, it's the Kundalini, of course, no doubt. But the way she has nourished you to absorb, to understand, to enjoy, this is very subtle music. And it has happened more with the Western people than with the Indians. I'm sorry to say. But Indians don't have that much of understanding nor that much of enjoyment. Westerners may not enjoy, understand, but they. I'm happy to see this resurrection of Indian music through you people. That was one of my greatest desires, to get the art, handicrafts, and music, all kinds of things which are created through this talent should prosper. I've always told you that artists must be respected by all Sahajogis, very much respected. The reason is, artists are expressing emotional intelligence. They are expressing emotional intelligence, which is appealing to our heart, to our personality, which soothes down our personality also. It's a special quality of artists that they can produce such entertainment that will awaken your emotional intelligence also, that you will be stirred up emotionally also. It gives you a balance. It's a very great gift of God to the artist that they can create through their emotional intelligence something that entertains you all. You feel entertained, and they themselves
when they produce or create something, they feel very much elated as. They are surprised from where it is coming. It's all coming from within. And that emotional intelligence really makes people get all the qualities of a good human being. Because you can become peaceful, you can become joyous. Also, you can be very generous with this and always respect artists, and artists must respect artists. I am of this opinion that they should all respect because they are doing the same thing together, that they are giving this beautiful entertainment to our conscience, which gets this emotional intelligence, which is very important, comes out of the love, the compassion. People in these modern times are so much harassed and so much in a mess. And this kind of entertainment is the best for them so that they relax into the compassion of the divine love. Thank you very much. I thank them very much, and may God bless them. Any other program where there are very few Sahajogis, you will see that the way they behave without any respect. The respect that is paid in India to the musicians has to be of a very high level, or any talent, say even art. See also people who make beautiful things from their hands. All these people who are so talented are to be respected very much because it's a special gift God has given. Now in India we have got a very big problem also. All great artists got into the, into the influence of the West. And so many of them take Scotch whiskey. What do you say to that? So many, and their music is finished. You can't even play cricket with Scotch whiskey, leave alone music. And this Western influence of taking drinks and things like that has ruined our musicians. And I don't know what's going to happen. I was quite worried that how is it going to be retained in this country, but now I have great hopes. Because if they see the Western people doing so well, see, for Indians, this goes into their heads. That how can they do it? Oh, that goes very much. If they see Western people doing such good music, it's very influential. So instead of having any Indian artist on the stage, we should really bring foreign. It will have a great effect, I tell you, on India. It's very shameful the way sometimes Indians behave in a classical music programs. Very shameful for anybody. They have no sense, nothing, and they go on misbehaving. They come there for social affair, I think, that's all. On this point, we Indians as Sahajogis are to be responsible and to see for yourself how much they have achieved. The Indians, when they go for this kind of a very deep type of music, after 15 minutes they start slipping out. Also, they told me that in England, they went to a music center, or we can say for the buying of the records or something. So all the boys who were there, who were Indians, were buying pop music, that music,
And they looked at these Sahajogis, they said, are you stupid fools? Why are you buying this music, this Indian music? What is there in this Indian music? They said, it's better not to talk to you because you are gone. Now, you see, because some or other, this is a Sahaj trick, I think, that your energy is tuned up to a very subtle and deep understanding of music. Otherwise, it would never have worked like that. I mean, it's the Kundalini, of course, no doubt. But the way she has nourished you to absorb, to understand, to enjoy, this is very subtle music. And it has happened more with the Western people than with the Indians. I'm sorry to say. But Indians don't have that much of understanding nor that much of enjoyment. Westerners may not enjoy, understand, but they enjoy. Indians feel those who are, little bit educated in music will start finding out faults, finding out ragas. This was not good, that, no, but not Western. Western people are so humble about it. Isn't it remarkable? How is it they are picked up so quickly and have understood? Because they have become subtler. This is the only thing I can say. They have become subtler and their energies are flowing through the subtler level. Now the third one I enjoyed very much was the dance. I always admired Kuchipudi the best because it has bhava, where they express all their feelings very clearly, very sweetly, everybody can understand. And also they have a footwork and all that. You have seen how she worked on that thali and how she danced. So these are all the techniques of Indian dancing, which is different from, I should say, Western dancing. But as many Indians have learned Western dancing, you can also learn Indian dancing. It's not difficult. And there are some Russian girls who are learning Indian dancing in Russia. I was surprised that through the embassy they are learning there. But it's very easy to understand Kuchipudi. That's the easiest thing to understand because very expressive. So I'm very happy to see her dance like this, and she's a Sahajogini. Her husband is a Sahajogi who is a filmmaker. Can you imagine? Such a simple man like him. So it was a very high standard program, I must say, because I never expected one after another such nice programs coming up. And after her dance, we had you people here. I've heard you separately, not together, so many. When there are people I know, they are from different countries, I know them. I've heard them separately, as I say. But I've never heard them together, and your music has to be done collectively. Sometimes you hear individual playing, but it has to be collective with the composers, things before you, and it is to be done in a very meticulous manner, extremely meticulous. I was surprised some Indians got up and went out, but if you go to any hall in the West for a concert or anything like that, opera or anything, you are not even supposed to cough. So much respect is to be given. But for Indian music, you can walk about, talk to people. Nobody minds that. Because perhaps people are very liberal. But I think one must respect the artist and the art. Otherwise, art won't grow. So now we have here some very nice musicians. I was surprised that none of them made any mistakes. That's the best part of it, though they were coming from different countries. And they did it so well and with such speed and understanding. I wanted them to play this Binati Suniya because in India we don't have any notation. Can you imagine? We don't have any composers. Only thing is we have to go through rigorous
training, rigorous training for at least, I don't know, I used to think that it's at least 20 years or 30 years, but nowadays I find the Western people get it in 3 years, something special about them. And after that only they can start singing with their own originality, with their own expressions. They don't need, they themselves are composers, as if they know the whole knowledge, how to build up, how are the melodies are, ragas are, how far to go, how to express, and they are left to themselves to do it. Now there's a rapport between the audience and between them. So that rapport works and they know how to play. This is another style. I would say both styles are all right. There's nothing wrong in any style or another style. But for Indian style, you have to go into a rigorous training. And if there are people who are connoisseurs sitting here, then you can be found out that you are making mistake, you are doing this. But normally, it is very enjoyable in the same way as your music is. You had composers, and they are different types of people. We couldn't play all of them today, but perhaps I like all of them very much, and I enjoy Western music equally same as Indian music, as well as South Indian music. Music is music. I mean, I don't understand that this music is superior, that music is superior. There's nothing like that. They are all different types of music, and only thing is you must have a sensitive ear to enjoy it. One's enjoyment is abstract. It is not according to the country, according to any style or anything. Everywhere music has developed, and we should learn to appreciate, to enjoy every type of music. The greatest problem of human beings is ego. If there is ego, you can't do anything about it. Because he thinks I've done something great, that I have this ego. And they cannot appreciate other people, leave alone loving anybody else. Ego means you love yourself, think no end of yourself. So, India is full of it. Abroad also I've seen it's quite a lot. But at least they know there is ego and they can face it. But this country, I don't know what sort of things they do, that they develop this ego. And they think they are quite right. Every country has its own problems. But we have something very great with us, is our music. Not musicians, but music. So the musicians should take to Sahaja. They should meditate. And if a musician is money-oriented, then you cannot help him. Either he should be music-oriented and not money-oriented. When they are money-oriented, they never value themselves, I think. Because if you have music, the talent of music, why should you care for money? And whatever money you give them, they'll be never satisfied. I have seen very great musicians who were never money-oriented, who didn't care for power. But we have, even now, many musicians whom I would not say are the last word on music. Those who are very humble. They'll always tell you we have to still learn a lot. We have to understand a lot. And if you have to reach them, you have to sing that song, but with depth and with feelings. You have to sing a song with very great depth and feeling. Everything should come from your heart, you see. Then it goes into that being. Otherwise it does not. It must come from your heart. So when you sing, you must practice it in such a way that you sing it from your heart.
That's very important. It should not be superficially sung, slightly sung, but from your heart it should come. Then practice it. Practicing is very important. You see, in Indian language, we call it riyaz. Same about Swadhisthana. Swadhisthana is for creativity. Anything you can create. You can create a sari, you can create a beautiful design, pattern, you can create a beautiful art or anything. But as soon as you put it on a mental level, it's finished. Also in the West, too much discussion is about the art. This is not art, that is not art, this should not be like this, that should not be like this. I mean, its creativity is spontaneous. Whatever the artist wants to produce, let him produce. Who are you to judge and criticize? You cannot appreciate anything unless it is brought to the mental level. But one thing is there now, see, it has to be rhythmic. Otherwise, if it is not proper rhyme and also in a proper rhythm, as you said, talas, any music, say it's English, it's Western, whatever, it has to have that link. In the Western music, whatever was composed, they used to use beats, I think, in the olden times. But in the modern times, there are no beats, there's no maryadas, nothing. So, in our Sahaja Yoga songs, we all must have maryadas. You cannot just sing something without any beat. You must definitely have beats. If it is a 4-beat song, or it's a, I don't know how many beats you have, but we have at least 28 also. I mean, ours is overcomplicated. But doesn't matter, you need not do that. 28 is too much. But up to 16 is simple. So, it must be in beats, first of all, and the tune should be such that it should form a melody. That's important. Because any tune anywhere, going anywhere, moving anywhere, you see, this kind of composition takes your mind from this to that to that to that. But if it's a melody, so you come back again on the sound, on the same point, again on the same theme, see. And when you come back on the same theme, it's something like your attention is on your spirit. Same time. So the music now, whatever you compose, should have a rhythmic movement. It should not go out of rhythm, you see. Should not. So you should be able to make it into beats. But I like this new thing that you have. And that one is, what do you call that? That you use? Huh? Yeah, guitar. Guitar is one thing I see that it gives you that beat. And in the all modern music, I'm very happy to know, very particular on the beat side. That's very important because beat keeps you the balance, it gives you the discipline of the music, it makes everybody sing all right, and it keeps you in proportion to the whole music. Otherwise, one goes like a long tail of kangaroo, another one goes like a small little tail of a rat, then another one. You see, it is not easy to follow such a music. People get confused. So, because our music is for the masses, our music is not for only few connoisseurs, you see, it is for the masses. So it has to be in rhythmic built, in such a way that the talas or whatever you call the beats have to be properly done, and that's why the modern music is so much appreciated. I tell you, there's nothing in this so-called modern music, but is the rhythm with which they capture the heart. And the rhythm is anahata. It goes with anahata, is the heartbeat, is the beating of the vani, is the beating of the force which makes the sound. And that's why beats are very important. And as you know, that it is described in the Devi Mahatmya about me, that very particular about tal, baddha, tied in the tal, because we have to deal with spirit
which is in tal always. So you should not go out of tune, you should not go out of tal also. So whenever you compose any music, make it a tal, some sort of a beat. Keep to that beat. It's better to have guitar, it's a good idea. But that keeps you in the same rhythm. And you will see that that will be much more appreciated in the masses than a sort of a, we don't have few people, now we have many. So to appeal to the masses, we have to have music that will have a rhythmic building up, talabad. And you will see people will appreciate it very much. I'm very happy it's working out so well. And last time in the Easter, the people from in Birmingham played that time, and it turned out to be very nice. You must have heard about it. It turned out to be very nice. So let us start with that kind of a thing. Build your music on the guitar style. Have beats there. You will see that it will make a kind of a movement of the Kundalini in a proper way. Because poor Kundalini does not know what to do now. It moves like that, and it suddenly comes up and goes. So these are different times, and according to the times, we have to compose our music. All right? And to do the accompaniment, the sangat, is a very difficult thing. I think it's easy to play solo, but to go with the mood and everything of the musician, and to bring out the beauty without going into competition, but to slow down at a point and heighten at a point, and all that little things comes from a very large heart, and from a heart which is already a realized soul. Otherwise it cannot work out. I have seen people fighting on the stage also sometimes. As you know, her mother is a great musician herself, right? And I hope I'm going to meet her. I went to Benares because she asked me to go there. And it's as if through these musicians also, our family of Sahaja is expanding so much. And the way they are realizing the oneness of our lives and oneness of our value system. As if they are all getting absolutely lost into our own families of Sahajogis. I don't find any difference because they all have vibrations, they all play with vibrations, and nothing goes wrong. I've seen it just like, as we say, sanchar hona. I felt there was sanchar in them the way they started playing. The whole Shakti started moving in them. And it was a remarkable thing I've seen, whether they are Muslims, Christians, Hindus, Sikhs, or anything. This music transcends them. This Nusrat Ali Khan Sahab was sitting on the stage. And he just looked at me. I don't know what he knows about me. He said to me, "Ma, come and sit next to me." I was amazed how he recognized me. I was like any other audience sitting there. So I was sitting on the ground. He just called me. I was so surprised at this gentleman, Nusrat Ali Khan. So it transcends, This music is divine. It transcends all races, all religion, all nonsensical, divisive ideas. No doubt about it. And that is what is Sahaja. I have to specially thank him for one thing, that he has now prepared really for the Guru Purnima for you. He's worked it out really very well. I can see that. I can feel it. It has worked within ourselves, that depth and that beauty. And with music, see, it's this excavation within ourselves, facing it within yourself. All these things with music become not only harmless, but also so gentle that you don't feel that it is happening. It just works. You see the, like, very gentle waves, it works within you, and you start developing that personality, which is very important for a function like Guru Purnima. And
the beauty and the joy. They all work it out so beautifully that you don't feel it, that it's all working, but I know it's feeling. But supposing if I say something as a guru, maybe may hurt you. You may feel upset. And you also may feel facing yourself a little bit sometimes reluctant, maybe diffident. You might feel a little sort of dejected or depressed. Or you may feel sometimes also, if I elevate you, then you might feel egoistical, you see. So the words could not render the services properly as the notes can, because the notes just penetrate within you and work it out so smoothly that you don't feel it's working there. It's working, no doubt. It's like mantras, it works, like mantras only. And when it's enlightened notes, it has great effect. I haven't brought you photographs, where when you are playing before me, you go into complete lights. I have got those photographs. Of course, also we have got, and we have got photographs now, tomorrow we'll be able to show you, where the lights change their forms, how through vibrations, how they change their forms. And how the vibrations work it out, you see. But even the notes are used by vibrations as vahanas. The notes are used, and the notes take the vahanas position and they penetrate. When there is somebody you are singing before, a realized soul or a evolved personality, then the Chaitanya flows within you. But notes are very helpful. I've seen the beautiful notes. And in harmony, you see, it's so much in harmony with you that you don't feel the penetration. You don't feel the injection. You don't feel the goading within you. Just it works and it just moves. And I was seeing your brain also opening out quite a lot, because the heart is so much connected with your brain now. You are integrated. So it's wonderful, and you are all becoming thoughtless and beautiful. I think you all have enjoyed his things, and we have to thank him very much, because on a Guru Purnima day that he agreed to come and has done the job halfway for me. I'm thankful to him that now, even if I say something, you won't feel hurt. To understand it, I think you require little knowledge about the percussions. If you have that knowledge, then you will understand how it is difficult, how it is intricate, and how it is creative to produce this. It's a very, very long study, long work they have to do, and practices after practices. That's how the Indian art is. But I was surprised that when Sahajogis go in for that, they are remarkable. And we are surprised that in such a short time they can master the art. So there's something special about Sahajogis. And also I was surprised yesterday that from Ukraine those people have come. Otherwise also so many of artists have come from all over. And they were so spontaneous. And I was told that none of them have had any training under any Indian guru or in any Indian school. Just on their own, I don't know how spontaneously Kundalini has worked it out, which part of which chakra it has touched, that these people have developed such beautiful sense of Indian music. I think it's the most difficult thing is Indian music. But it is because it is not like Western music where you have already a composer who has put the composition and you have to read it and that's how you have to play. Composer is also a free man. He can do whatever he likes with his composition. Sometimes it starts slowly, sometimes it starts with a bang, sometimes, I don't understand the logic behind it. But whatever it is, it's very interesting, and I love your Western music also, if it is classical. Also jazz is all right,
But otherwise, I don't know how to understand pop music very much. Maybe I'm so ignorant about it. Then comes the understanding of our style in Kathak style. And also Kathak, I have seen people learning in the academy have done so well. It's surprisingly, in such a short time, how have they achieved it? Is it Kundalini that works it out? I don't know. Jai Shri Mataji. This also reminds us of all the artists, skilled handicrafts who have put in efforts, their skills to decorate such a wonderful stage for Shri Mataji. May Shri Mataji bless them all. ऐसे कई जाने अनजाने कलाकार जिन्होंने अपनी हैंडीक्राफ्ट की कला का प्रदर्शन करते हुए श्री माता जी के लिए इतना सुंदर सा डेकोरेशन किया है। श्री माता जी उन्हें भी आशीर्वादित करें। जय श्री माता जी। जो हमारा नेक्स्ट परफॉर्मेंस है वो पुणे युवा शक्ति द्वारा देवी भागवत पर आधारित एक नाटकीय प्रस्तुति है। श्री माता जी के असीम अनुकंपा में पुणे युवा शक्ति निर्मल नगरी के इस पावन भूमि पर, पावन स्टेज पर आप सबके समक्ष श्री माता जी के पावन श्री चरण कमलों में एक नाटकीय रूपांतरण एवं नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये नाटकीय रूपांतरण देवी भागवत के एक अध्याय से लिया है जहाँ देवी के असीम शक्तियों का वर्णन है। तो आइए हम सब उन शक्तियों को पहचानते हैं, श्री माता जी को थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। प्रस्तुत है ड्रामा जिसका नाम है ब्रह्म शोधिले ब्रह्मांड मिड़ाले। जय श्री माता जी। जोरदार तालियों से हम इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। कल रात भी वो 3-4 बजे तक पूरा अपना जो प्रॉपर्टीज़ है वो तैयार कर रहे थे। तो इस मुकाबले में हमारी जो तालियां है वो बहुत कम है। उन्होंने अपने साइड से बहुत मेहनत करी है। श्री माता जी उनसे बहुत इस ड्रामा के लिए तैयारी करवाई है। तो ज़ोरदार तालियों से पुनः एक बार हम सब उनका स्वागत करेंगे।
नारायण 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 नारायण। आप सभी का इस पुण्य एवं पावन भूमि पर स्वागत है। हम सब इतने सालों से श्री आदि शक्ति के विभिन्न स्वरूपों में पूजन करते आए हैं, पर क्या हम सब जानते हैं कि श्री आदि शक्ति कौन है? क्या आप, मैं उस शक्ति को पहचानते हैं जिनके समक्ष हम हाथ खोल के ध्यान करते हैं? नारायण नारायण। आइए उस शक्ति को पहचानते हैं, श्री आदि शक्ति को जानते हैं। जानते हैं कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस प्रकार हुई। क्या ब्रह्मा जी ने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है या विष्णु जी इस विश्व के रचयिता है? नारायण नारायण। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शंकर जी ने इस सृष्टि का सृजन किया है। इन देवताओं की पूजा करनी चाहिए तथा कौन से देवता सबसे श्रेष्ठ एवं समर्थ है? नारायण नारायण। आप में कई साधक ऐसे भी होंगे जिन्हें ये प्रश्न कभी ना कभी आया ही होगा। यही जिज्ञासा कुछ समय पूर्व मेरे भीतर भी उत्पन्न हुई थी। नारायण नारायण। तब मैंने अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी से इस विषय में पूछा। तब उन्होंने मुझे एक सत्य से परिचित किया। नारायण नारायण। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं, इनमें से कोई भी नहीं थे। तब कमल से श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी स्वयं को जल में देख आश्चर्यचकित होकर मनी मन सोचने लगे। नारायण 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 नारायण। इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया? कौन है मेरा रचयिता? दूर दूर तक स्पष्ट रूप से कहीं भूमि भी नजर नहीं आ रही जिस पर ये जल टिका हुआ है। और ये कमल, ये कैसे उत्पन्न हुआ? ब्रह्मा, साधना करो, साधना। ब्रह्मा, अब तुम्हें सृष्टि का निर्माण करना होगा। सृष्टि का निर्माण? परंतु ये कैसे संभव है? शायद इस प्रश्न का उत्तर मुझे साधना से ही ज्ञात होगा।
भ्राता कैटब, ये व्यक्ति कौन है और ये इतनी सुंदर जगह पर अकेला क्या कर रहा है? इनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। इनसे युद्ध करने में बड़ा ही आनंद आएगा। हम इन्हें आसानी से युद्ध में हराकर ये विशाल कमल का आसन हथिया लेंगे। उठो, अरे उठो, सुना नहीं तुमने? 4 मुख वाले तुमसे कह रहे हैं। कौन हैं आप दोनों और क्या चाहते हो? तुम हमें नहीं जानते। हम दोनों दानव श्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली, शूरवीर, बलवान, मैं मधु और ये मेरा भ्राता कैटब है। हम तुमसे युद्ध करने हेतु यहां आए हैं। हमें तुम्हारा ये आसन भा गया है और हम इसे छीनने आए हैं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरध्यानगम्यम्। हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए, मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए। पद्मयोनि ब्रह्मा जी, आपको अपनी ध्यान धारणा छोड़कर यहां क्यों आना पड़ा? भगवान, आप इतने चिंतित और भयभीत क्यों हैं? ऐसी कौन सी आपत्ति आ पड़ी है जो आपको इतना विचलित कर रही है? भगवान, मधु और कैटब नामक 2 दैत्य आपके कान की मैल से उत्पन्न हुए हैं। उनका रूप बड़ा ही भयंकर है और वे दानव अत्यंत बलवान प्रतीत होते हैं। वे दोनों मेरे प्राण हरने के लिए उपस्थित हैं। जगत प्रभु, उनसे डरकर मैं आपके पास चला आया। भगवान, भय से मेरा कलेजा कांप रहा है और चेतना लुप्त सी हो रही है। अब आप ही मेरी सहायता करें। ब्रह्मा जी, यहां विराजिए। अब आपका भय समाप्त हुआ। वे मूर्ख दानव अपनी आयु खो चुके हैं और शीघ्र ही मेरे से युद्ध करने आएंगे और मैं निश्चित रूप से उनका वध कर दूंगा। अरे तुम भयभीत होकर इसके पास चले आए। अब क्या ये तुमको हमसे बचाएगा? अब हमसे युद्ध करो या तुम ऐसे ही देखते रह जाओगे और हम तुम्हारे प्राण हर लेंगे। इसके बाद सर्प के फन पर बैठने वाले इसको भी हम मार डालेंगे। दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा पूर्वक मुझसे युद्ध कर लो। महाभाग, तुम बड़े बली हो। तुम्हें असीम अभिमान हो गया है। यदि युद्ध करने की अभिलाषा हो तो आ जाओ,
मैं तुम्हारा अभिमान अभी दूर कर दूंगा। मैंने 5000 वर्षों तक इन दोनों दानवों से युद्ध किया, पर मरना तो दूर, ये दानव थक भी नहीं रहे और बिना किसी श्रम के मुझसे लड़े जा रहे हैं। और यहाँ मेरी लड़ने की क्षमता कम होती जा रही है। इन दानवों को हराने के लिए अब कोई और ही युक्ति करनी पड़ेगी। हे विष्णु, यदि तुम्हारा बल समाप्त हो रहा है तो हमारे अधीन हो जाओ, और अगर ये मान्य न हो तो आओ युद्ध करो हमसे। तुमको तो हम मार ही डालेंगे और साथ ही इस ब्रह्मा के भी प्राण हर लेंगे। दानवों, इस युद्ध भूमि में मैं अकेला हूं और सामने बल वाले तुम दो भाई लड़ रहे हो। तुम दोनों समय समय पर जैसे विश्राम कर लेते हो, वैसे ही मैं भी कुछ देर विश्राम कर युद्ध करूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम दोनों महान मतवाले शूरवीर हो, परंतु कुछ समय के लिए ठहरो, मैं विश्राम कर लूं, फिर न्यायपूर्वक युद्ध आरंभ होगा। हाँ ठीक है, हमें यह स्वीकार है। तुम्हें एक अवसर देते हैं। चलो भ्राता, हम भी थोड़ा विश्राम कर ले। यह आश्चर्य की बात है कि मैं इतने वर्षों से इनसे युद्ध कर रहा हूं, परंतु इनकी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? प्रभु, भगवती ने इन्हें वरदान दिया है। इनकी इच्छा अनुसार ही मृत्यु इनके पास आएगी। भगवती वर दे चुकी है और वो इसे टाल नहीं सकती। ब्रह्मा जी, भला अपनी इच्छा से तो असाध्य रोगी और दरिद्र मनुष्य भी मृत्यु का आवाहन नहीं करता, फिर ये क्यों मरना चाहेंगे? हमें भगवती के शरण में जाना चाहिए। इस समस्या का समाधान अब केवल वे ही दे सकती हैं। विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो, अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। मेरी वक्र दृष्टि से ये दानव अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। हरि, मेरी माया से मोहित हो जाने पर उनका अहंकार ही उनके मृत्यु का कारण बनेगा। विष्णु, बहुत हुआ तुम्हारा विश्राम। आओ अब युद्ध करो। वीर, मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो। तुम बड़े ही बलवान हो। तुम दोनों भाइयों की अभिलाषा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। विष्णु, हम यहां मांगने नहीं आए हैं और तुम हमें क्या ही दोगे? देवेश, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हम याचक नहीं,
हम तो उद्धार दाता है। तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। तुम्हारे इस अद्भुत युद्ध से हम बड़े प्रसन्न हैं। हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हारी इच्छा हम अवश्य पूर्ण करेंगे। यदि तुम लोग मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे वर देना ही चाहते हो तो बस मेरे हाथों से अपनी मृत्यु स्वीकार करो। ये कैसे संभव है? हम अपनी ही मृत्यु का वरदान कैसे दे? भ्राता, इस विष्णु ने बड़े ही चालाकी से हमें अपने शब्दों के माया जाल में फंसा दिया है, परंतु हम वचनबद्ध है और ना चाहते हुए भी हमें इसे स्वीकार करना होगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य है। इन महान पराक्रमी दैत्यों का निधन हो जाने पर अब तुम्हें अपना स्थान बनाकर शांतिपूर्वक निवास करना चाहिए। तुम अब अपने सामर्थ्य से 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करो। माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं का सृजन आदि कार्य करने में सफल हो? विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है, पंचभूत, गुण एवं तन्मात्रा, इंद्रियाएं चाहिए, परंतु उनका भी अभाव है। ब्रह्मदेव, मैं जानती हूँ आप तीनों इन प्रजाओं से अज्ञात है। आइए, मैं आपको एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। निर्भय होकर इच्छा पूर्वक आगे बढ़े। चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? भगवन, मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? मैं कौन हूँ और हमारा उद्देश्य क्या है? ये कैसी उलझन है? आइए आगे प्रस्थान करते हैं।
नमः शिवाय। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आदि शक्ति भगवती आदि शक्ति भगवती आदि शक्ति भगवती आदि शक्ति भगवती आदिशक्ति भगवती जगदम्बे सब करुणा विजया निर्मल जगदम्बे सब करुणा विजया आदिशक्ति भगवती आदिशक्ति भगवती आदिशक्ति भगवती आदिशक्ति भगवती आदिशक्ति भगवती निर्मल जगदम्बे संग करुणा विजया सहस्रारे महामाये सहस्रारे महामाये कलयुग अवतार लिया निर्मल जगदम्बे सन करुणा विजया ये देवी कौन है? इनका क्या नाम है? हम इनके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। दूर से देखने पर ये कितनी दिव्य एवं अलौकिक प्रतीत होती हैं। हे जगत प्रभु, क्या आपको इनके विषय में कुछ ज्ञात है? ब्रह्मा, रुद्र, ये भगवती हम सभी की आदि कारण है। महाविद्या और महामाया इनके नाम हैं। ये पूर्ण प्रकृति है, कभी इनका नाश नहीं होता। मंद बुद्धि जन
इन्हें जान नहीं सकते। योग द्वारा इनका साक्षात्कार होता है। गंभीर आशय वाली ये देवी परब्रह्म की इच्छा है। ये नित्य है और इनका विग्रह भी नित्य है। ये विश्वेश्वरी, वेद गर्भा एवं शिवा कहलाती हैं। इनके विशाल नेत्र हैं। ये सबकी आदि जननी है। प्रलय काल में अखिल जगत को समेट लेती है। ब्रह्मा एवं शंकर, ये सर्व बीजमयी देवी विराज रही है। इनकी करोड़ों विभूतियां अगल बगल विराजमान हैं। उन विभूतियों का शरीर दिव्य अलंकारों एवं दिव्य गंधों से सुशोभित है। प्रभु देखो, वे सभी सहचर्या भगवती की सेवा कर रही है। जो प्रभुत पुण्य वाले महान दानी एवं तपस्वी है, उन्हीं को कल्याण स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी के दर्शन मिलते हैं। रागी जन इनका दर्शन नहीं कर पाते। ये मूल प्रकृति है। परम पुरुष दृष्टा है। यह चराचर जगत दृश्य है और उन परम पुरुष की ये आदि शक्ति महामाया सबके अधिष्ठात्री देवी है। यही संपूर्ण संसार की कारण है। ये हम सबकी जननी है। ये परम आदरणीय महामाया हमें अवश्य वर प्रदान करेंगी। इनके निकट चलकर निर्भीक हो हम इनकी चरणों की उपासना में लग जाएं। द्वार पर रहने वाले द्वारपाल हमें रोक देंगे तो वहीं ठहर कर सावधानी के साथ हम इनकी स्तुति आरंभ कर देंगे। आइए हम इन्हें बारंबार प्रणाम करते हुए इनके पास चले। हे देवी भगवती, आपके पावन श्री चरण कमलों में हमारा बारंबार प्रणाम स्वीकार करें। देवी, आपके चरण कमल के समान कोमल है। आपके नख में ही स्थावर जंगम सारा ब्रह्मांड विराजमान है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, समुद्र, नदियां, वैकुंठ, ब्रह्मलोक तथा पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, ये सब के सब समाये हुए हैं। प्रकृति देवी को नमस्कार है। भगवती विधात्री को निरंतर नमस्कार है। माता, मैं जान गया, यह संपूर्ण संसार आप ही के भीतर विराजमान है। अतः आप ही परब्रह्म स्वरूपिणी श्री आदि शक्ति हो और ये आप ही की शक्ति है जो जगत की सृष्टि और संहार का कार्य करती है। आपकी ही व्यापक माया इस संसार को सजाती है। अब मैंने आपका पूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया कि आप अखिल जगन्मयी हो, इसमें कोई संदेह नहीं। माता, आपने ही मधु कैटब के चंगुल से हमारी रक्षा की। आपके चरण कमलों में मस्तक झुकाकर मैं आपसे यही मांगता हूं कि आपका यह रूप निरंतर मेरे हृदय में बसा रहे। मेरे मुख से आपका नाम कीर्तन होता रहे
तथा ये नेत्र आपके चरण कमलों की झांकी से कभी वंचित न हो। मैं पूर्ण हृदय से आपके चरणों में मस्तक झुकाता हूं। माता, यदि महाभाग विष्णु आपसे प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी आप ही के बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शिवशंकर क्या आपकी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे उत्पन्न करने वाली आप ही है मां। हे जगत जननी, हे आदि शक्ति, पृथ्वी, जल, पवन, आकाश, अग्नि, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, बुद्धि, मन और अहंकार, ये सब आप ही हो मां। इस चराचर जगत को आप ही बनाती हो। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर यानी कि मैं, तीनों सदा इसे सजाने में व्यस्त रहते हैं। हे जगत जननी, यदि कहा जाए कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों सगुण तत्वों से जगत स्वयं उत्पन्न हो सकता है, तो ये पांचों तत्व भी आप ही की कला है मां। हे भगवती, हे जगत जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप धारण करके आप ही जगत की रचना करती हैं। हे आदि शक्ति, हे जगत जननी, इस शिव शंकर का प्रणाम स्वीकार करें। माता, आप अखिल जगत की सृष्टि करने वाली शुद्ध स्वरूपा हो। वेद आपके ऐसे रूप की कल्पना करने में अकुशल है। त्रिलोक में कोई भी वस्तु नहीं है जिसको आप ना जानती हो। जो आपके पावन चरित्र को पूरा नहीं जानते, वही मानव मुझे प्रभु बताया करते हैं। भवानी, विष्णु और शंकर प्रभृति आदि पुरुष हैं। वे आपके सर्वोत्तम रहस्य को जानते हैं और उन्हें उसका अनुभव भी है। वे आपके शिवा, अंबिका, शक्ति एवं ईसा आदि पावन नामों का आधे पल के लिए भी त्याग नहीं करते। क्या आप विश्व का निर्माण नहीं कर सकती थी? अवश्य कर सकती थी, क्योंकि आपकी दृष्टि पड़ते ही 4 प्रकार के प्राणी जगत में उत्पन्न हो सकते हैं। सृष्टि के आदि में केवल विनोद के लिए ही आप मुझ ब्रह्मा को बनाकर ये सृजन कार्य संपादित करती हो। भवानी, आप एक हो, आद्या शक्ति हो। संपूर्ण स्वतंत्र वेदों ने आपका ये ज्ञान कराया है। हे देवी, आपके संपर्क से ही मैं ब्रह्मा सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में और शंकर संहार करने में कुशल है। हे भगवती, आपके इस दिव्य स्वरूप को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है।
ब्रह्मा जी, इस सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूँ। संपूर्ण देवताओं में विभिन्न नामों से मैं ही विख्यात हूँ। मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी और भवानी सब मेरे ही रूप है। विभिन्न कार्यों के उपस्थित होने पर उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करके मैं सारी व्यवस्था करती हूँ। मैं और ब्रह्मा एक ही है। मुझ में और इन ब्रह्मा में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वह है वही मैं हूँ और जो मैं हूँ वही वह है। ब्रह्मा जी, मैं आपसे निश्चित कहती, यदि मैं शक्ति हट जाऊँ तो संसार में एक भी प्राणी हिल डुल न सके। ब्रह्मा जी, आज मैं आपको श्री महासरस्वती की शक्ति प्रदान करती हूँ। कृपा कर आप इसे स्वीकार करें। इसके बाद जिस प्रकार पहले सृष्टि की थी वैसे ही संपूर्ण प्राणियों की रचना का कार्य आरंभ करें। जाइए, अब अपने घर द्वार का निर्माण करके वहीं रहिए और अपने अपने कर्तव्य का पालन करें। ब्रह्मा जी, इस शक्ति को आप अपनी स्त्री बनाइए। ये अनुपमा सुंदरी है। इसका मुख सदा मुस्कान से भरा रहता है। महासरस्वती नाम से विख्यात इस श्रेष्ठ देवी में सभी रजोगुण विद्यमान हैं। इसका दिव्य शरीर स्वच्छ वस्त्रों से सुशोभित है। अलौकिक आभूषण इसकी छवि बढ़ा रहे हैं। ये सुंदरी अब सदा आपकी स्त्री होकर रहेगी। इस प्रेयसी भार्या को भी मेरे ही विभूति समझकर आदर की दृष्टि से देखिएगा। कभी भी इसका तिरस्कार करना वांछनीय नहीं। अब आप शीघ्र इसे साथ लेकर सत्यलोक में पधारें। समय हो गया है, अतः महत्त्व का सहारा लेकर 4 प्रकार की सृष्टि बनाने में तत्पर हो जाए। विष्णु, मैं आज आपको श्री महालक्ष्मी की शक्ति प्रदान करती हूँ। मन को मुग्ध करने वाली इस शक्ति को लेकर आप भी पधारे।
कल्याणी, संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली शक्ति है। आप कभी इसका तिरस्कार न करके सदा सत्कार करते रहना। अब मैंने आपको लक्ष्मी नारायण कहलाने की सुविधा दे दी है। विष्णु गुणों में जो दूसरे भेद है वह आपको बताती हूँ। आप एक महान पुरुष हो। आपके पास सत्व गुण की प्रधानता रहनी चाहिए। अन्य रजोगुण और तमोगुण आप में गौड़ होकर रहेंगे। विभिन्न जगत में रजोगुणी होकर आप इन लक्ष्मी के साथ सदा आनंद करना। पुरुषोत्तम, आप वैकुंठ की रचना करके वही विराजमान रहो। मैं सदा स्थिर रहने वाली आद्या शक्ति हूँ। मेरा चिंतन करते हुए इच्छानुसार विहार करना। ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಮ್ಮ। शंकर, मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात इस शक्ति को स्वीकार करें। आप इन्हें पत्नी रूप से स्वीकार कर कैलाश की रचना कर वही रहे और इनके साथ सुखपूर्वक आनंद करें। आपकी लीला में तमोगुण की प्रधानता रहेगी। सत्वगुण और रजोगुण गौण होकर रहेंगे। रजोगुणी और तमोगुणी बनकर असुरों का संहार करने के लिए लीला आरंभ कर दे। शंकर, मैं समयानुसार सगुण और निर्गुण भी रूप धारण कर लेती हूँ। महानुभव देवताओं, अब मेरा कार्य सिद्ध करने हेतु आप तीनों शीघ्र ही प्रस्थान करें। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब आप मेरा स्मरण करेंगे तब मैं अपनी पूर्ण शक्तियों के साथ आपके समक्ष प्रकट हो जाऊंगी। देवताओं, मेरी ध्यान धारणा आपको सदा करती रहनी चाहिए। मेरी निरंतर साधना से
आपके सभी कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। आज मैं आप तीनों को इन शक्तियों से आशीर्वादित करती हूँ। और ये पूर्ण रूप से सिद्ध करती हूँ कि इस चराचर ब्रह्मांड को चलाने वाली मेरी ही शक्ति है। इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो मेरी ही इच्छा अनुसार हो रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मेरी ही पूजा एवं आराधना करते हैं। मैं ही परब्रह्म की इच्छा हूँ, सर्वव्यापक शक्ति हूँ, सभी देवी देवताओं की मैं ही जननी हूँ। मैं आदि हूँ, अनंत हूँ, अविनाशी हूँ और मैं ही इस ब्रह्मांड की जननी आदि शक्ति हूँ। But today is the day I declare that I am the one who has to save the humanity. I declare I am the one who is Adi Shakti, who is the mother of all the mothers, who is the primordial mother, the Shakti, the desire of God, who has incarnated on this earth to give its meaning to itself, to this creation, to human beings. And I'm sure through my love and patience and my powers, I'm going to achieve it. I was the one who was born again and again. But now in my complete form and complete powers, I have come on this earth not only for salvation of human beings, not only for their emancipation, but for granting them the kingdom of heaven, the joy, the bliss that your Father wants to bestow upon you. May God bless you.
बोलो आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की, निर्मला देवी की, निर्मला देवी की। श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड जननी श्री परमेश्वरी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की, निर्मला देवी की। श्री महामहानंदे महामहास्कंदे श्री महामहाशक्ते श्री महामहागुप्ते श्री महामहाश्री चक्र नगर साम्राज्ञी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की, श्री निर्मला देवी की। Jai Shri Mataji. Few of our foreigner brothers and sisters, they asked for the translation of the drama. For them, I'm translating. Shri Mataji on numerous occasions has said that if you want to know me or if you want to understand about me in complete form, then you will have to read Devi Bhagavat. So this was an drama based on one of the adhyayas in Devi Bhagavat. Basically, this was the moment of self-realization for Brahma, Vishnu and Mahesha. As we have our realization moment with Sri Mataji, so this was the moment of self-realization for the all three deities. Okay. Now, they say that Sri Adishakti is herself so capable that only through her glance she can create millions and millions of universes. However, she chooses to establish the purity and use them as an instrument to propagate the message of love and to create this entire creation. Now, as you could see, the Madhu and Kaitab, basically they represent the ego and superego. This is what I just realized. See, the Madhu and Kaitab are the representation of the ego and superego. Okay, during that time when the deities were attacked, they were killed by, when the gods found them that they are powerless to kill the Madhu and Kaitab without the energy and without the blessings of Adi Shakti. So it is through the Adi Shakti's powers, it is through the Adi Shakti's blessings. They act as an instrument to kill the ego and superego. Okay, so it is through the power of Adi Shakti they've been able to kill these demons, and it's also interesting to see that they have been killed by the yukti. You could see that they were tricked. The ego and superego is being tricked so that they are killed, and then it is they were also killed by the Lord Vishnu, who is himself a Yogeshwara. So the message is that through the trick that Adi Shakti gives, similar way she has given us the trick to the Hum and Sham. So the trick which is given by Adi Shakti, which was inspired to Lord Vishnu, and with that trick he could kill those demons and he established that Yogeshwara principle. So this is a wonderful message that, and we can see that अगर सृष्टि के पालक, सृष्टि के रचयिता और सृष्टि के जो डिस्ट्रॉयर है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश, वो भी अगर आदिशक्ति के इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कार्य करते हैं, तो फिर हमारा ईगो और सुपर ईगो किस चीज़ का रह गया? तो आई थिंक इस ड्रामा के माध्यम से हमेशा ये हमें याद रहना चाहिए कि अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आदिशक्ति के इंस्ट्रूमेंट है, तो हम कुछ भी नहीं है. तो आई थिंक ये हमारा सेल्फ रियलाइजेशन का मोमेंट है. सो वंस अगेन, जिसे भी श्री माता जी ने ये इंस्पिरेशन दिया है कि टू प्रेजेंट दिस ड्रामा, विल प्रे टू श्री माता जी लोटस फीट दैट लेट देम ऑल बी ब्लेस्ड. एंड वंस अगेन आई थिंक हमारे तालियों की आवाज़, हमारी
जो भी धन्यवाद है कि उनके माध्यम से हमारा ईगो और सुपर ईगो कम हो रहा है, जिसके लिए वो माध्यम बन रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डेटीज एंड एवरीवन, द एंटायर टीम. जोरदार तालियों से हम उनका आभार भी करेंगे, श्री माता जी का आभार करेंगे. जय श्री माता जी. Now I invite Sridhar Pai, sir, to present, felicitate the entire team. And just to add to it, I don't know how many of you realize that when the deities were actually walking, there was such a cool breeze which was flowing, and their entry was so special that when the Mahalakshmi walked in, you could see her sari was blowing. So this is, I think, this very divine. We cannot even think how it is happening. Even if now you can see the cool breeze is flowing. There's been a lot of blessings by Adi Shakti herself. Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji, and whatever you could see, the costumes, the script writing, direction, editing, like everything that has been done by the Pune Yuva Shakti, Bal Shakti, they have been actively doing it. So I think जोरदार तालियां इस सब चीज़ों के लिए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता पूरा कंसेप्चुलाइज करना हर एक चीज़ को. सारा का सारा उन्होंने अपने हाथों से बनाया है. कॉस्ट्यूम्स एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डन. सो आई थिंक जोरदार तालियां. जितनी ज़ोर से आप पूरे सेमिनार में नहीं बजा होगा, आप उतने आज बजाइए पूरा दिल खोल के. देखिए फिर से फ्लो. After this, we will bow down to Shri Mataji. We will thank Shri Mataji. Shri Mataji, through your blessings, through your guidance, आपके परम आशीर्वाद से ही हम इस चैतन्य को महसूस कर पाए हैं. श्री माता जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग. श्री माता जी, थैंक यू फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन. थैंक यू फॉर यूनाइटिंग अस एट योर लोटस फीट ऑन दिस ऑस्पिशियस लैंड, ऑस्पिशियस ओकेजन. हम श्री माता जी को नतमस्तक होकर वंदन करते हैं और बंधन लेंगे.